India continues to speed up its evacuation process in the war-torn Ukraine. In the latest, the fifth Operation Ganga flight, which carried 249 Indian nationals stranded in Ukraine, has reached New Delhi from Romania. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held an emergency high-level meeting with top officials, and the situation of stranded Indians in Ukraine was the point of discussion. Sources also suggest that the meet went on for over 2 hours, where it was discussed to further enhance the cooperation with neighboring countries of Ukraine to expedite this evacuation process. Now, India has so far evacuated around 2,000 of its citizens from Ukraine after the conflict between Russia and Ukraine really began, and efforts are currently on to facilitate the exit of the remaining stranded Indians through various border transit points to the neighboring countries. At the border, I can't even describe how terrible the experience was. It was a very hectic, very panicky situation. I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward, but eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. अभी सिचुएशन तो अभी क्रिटिकल है बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे और गेट वगैरह वो बंद करते ओपन करते दैट्स व्हाई सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी बहुत ही critical. The Indian government is providing really good service, but we faced many problems at the Romania border because the government of Ukraine, they are not allowing to pass us easily. But the Indian government is doing its best for helping and supporting us. And here also they helped us a lot. Like Indian embassy helped us to come over here, and further they are also providing services like food, etc. जैसी भी वॉर सिचुएशंस हैं, ठीक है, कोई वहाँ पे फील सेफ नहीं करेगा, ठीक है. टेरिबल सिचुएशन से हम लोग निकल के आए हैं, एंड वो सिचुएशंस उनको याद करना देर रियली हॉरिबल, ठीक है. बट जस्ट हमारी इंडियन एम्बेसी एज वेल एज हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स यूरेशिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिंक, दे हेल्प्ड अस थॉरली, एंड वी आर जस्ट वन ऑफ दोज लकीएस्ट वंस जो यहाँ पे पहुँचे हैं. एंड लेट्स जस्ट कीप प्रेइंग फॉर दोज जो अभी तक बॉर्डर्स भी नहीं क्रॉस कर पाए. These are voices of Indian students who have managed to return to India. In fact, this is the fifth Operation Ganga flight, which carried 249 Indian nationals who were stranded in Ukraine. They are in fact narrating the ordeal of the people who still remain in Ukraine at the borders which meet Romania and Poland, and how the security and relief efforts are needed to be expedited if we need to get our citizens back to the country. My colleague Amit Kumar now joins me on the broadcast. Amit, एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर की है, वो इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो रिमेनिंग इंडियंस हैं उनको वापस लाया जाए, और क्या जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? देखिए, जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है उसके तहत अभी लगभग 1000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स और लोग वहां फंसे थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी वहां मौजूद हैं. सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि वो एम्बेसी को जो फोन कर रहे हैं या एम्बेसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसे में भारत सरकार ने एक ट्विटर हैंडल शुरू किया है ऑपरेशन गंगा को लेकर, जिसमें ऑपरेशन गंगा या जो लोगों को वहां से निकालना है उसके लिए अपील भी ये कर रहे हैं कि जो लोग भी वहां फंसे हुए इस ट्विटर हैंडल के जरिए संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि फोन के कनेक्शन से कई लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे बड़ी प्राथमिकता कल करीब 2 घंटे की बैठक चली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में. उसमें जो सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचे, उन्हें संपर्क किया जाए और फिर उनको निकाला जाए. भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं वहां पर, अगर वो सराउंडिंग कंट्रीज में जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वहां पहुंच सकते हैं, बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, तो उसके बाद वहां से उन्हें निकालना आसान हो जाएगा. इसके अलावा जो भारत सरकार है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके अधिकारी लगातार जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनसे डिप्लोमेटिक चैनल पर बात कर रहे हैं, ताकि जो वहां पर जब लोग पहुंचे तो वहां पर उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके और इसके बाद उन्हें वहां से निकाला जा सके. तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें जो विदेश सचिव है सिंगला, उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया कि ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, कहां कहां पर मदद मिल रही है और लोगों जो वहां पर हैं उनको किस तरह संपर्क किया जा रहा है.
तो एक प्रेजेंटेशन भी था, करीब 2 घंटे तक बैठक चली और प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत पे चाहे जैसे भी हो भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए और उसके लिए जो भी करना हो आप करें। Absolutely. Amit, thank you so much for bringing us up to speed with all those details. So, Operation Ganga currently underway. Fifth flight has returned to the country with 249 Indians who have managed to get back from Ukraine. The operations, in fact, continue. We are constantly flashing the helpline numbers for all of you to keep in touch with your kin who are stranded in Ukraine and also with the embassy, which is making efforts to get the Indians back safely to the country.